Students, I am Raju Jaiswal. In earlier classes, we discussed the distance. Now, we are going to discuss the displacement. So, what is the displacement? Displacement is nothing but it is the shortest distance between the initial position and final position of the moving object in the given interval of time. दिए गए टाइम में बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, यदि बॉडी का फाइनल और इनिशियल सेम हो जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. यानी बॉडी जहाँ से स्टार्ट किया है और वहीं पे पहुँच जाएगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉडी का वो सेम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम हो गया. ठीक है, and it is denoted by the s vector. It is the vector quantity and its unit is the kilometer a meter. Let's see the problem. A boy moves 3 meter towards the east. He then turn and move 4 meter towards the north. Calculate the distance traveled by the boy and displacement of the boy. A boy travel 3 meter along the east and then he turn and move 4 meter towards the north. Okay, so first calculate the distance traveled by the boy, and we know that distance is what, this is the length of the actual path. So body start from O, this is the initial position, and B, this is the final position, and body first move OA, then he move AB. So OA distance traveled by the body is y is what, OA plus AB means 3 plus 4 7 meters. Okay, now calculate the displacement of the y, and displacement is what, this is the shortest distance between the initial and final position, so we join OB. Okay, and now OAB, this is the right angle triangle, so we apply here Pythagoras theorem to calculate the hypotenuse sides. So OB square is equal to OA square plus AB square. So OB is equal to square root OA square plus AB square. It is a written here AB square. Okay, don't be confused. Under root OA here 3, so OA square, so 3 square plus AB here 4, so 4 square. 3 square means 9, 4 square is 16. 9 plus 16 25, square root of 25 is 5 meter. Displacement of the boy is OB is equal to 5. So distance traveled by the boy is 7 meter, but displacement of the boy is what, 5 meters. Okay, now see the another example. Find the distance and displacement covered by the object from A to A in the given figures. यानी ए टू ए इन सेंस बॉडी यदि मूव कर रहा है ए से और फिर मूव करके अगेन ए पे रीच करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए. तो डिस्टेंस ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मीन्स 4 प्लस 3 प्लस 5, दिस इज द 12. एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम, क्योंकि बॉडी जहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वहीं पे रीच कर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा. नाउ वी सी द सेकेंड प्रॉब्लम. दिस इज द सर्कुलर पाथ whose radius is the 7 meters. Body start from A and move and reach the same points A. So find the distance and displacement. And we know that distance is the length of the actual path, so this is the circumference of the circular path, and circumference of the circle is what, 2 pi r. So by this formula we can calculate the distance traveled by the object. Okay, now calculate the displacement is what. So displacement is 0, again is 0 in this case because the initial and final position are same. Okay.